Hi children, in lastly we completed the total cost. Now in this part we will try to understand the average fixed cost. Okay, fixed cost like an average. Okay, how we find it? So you can see here average fixed cost. If total fixed cost is divided by total production, then that is the average fixed cost. Okay, here it is said that average fixed cost is the cost of per unit of output by dividing total fixed cost of the firm with production unit. We get average fixed cost. Okay, so you can see here I have drawn one schedule. Okay, here total outputs has given 10, 20, 30, 40, 50. Outputs means productions are increasing, but cost is fixed. 300, 300, 300, 300, 300. There is no change in factor cost, total fixed cost. Okay, now this one is divided by this one, means 300. You divide it by 10, then what you will get? 30. Similarly, 300 divided by 20, 15, 300 divided by 30, 10, 300 divided by 40, 7.5, and 300 divided by 50, 6. Is it clear? Now you see here, in x-axis, we show the output, this one, 10, 20, 30, 40, 50, 60. And here we have show this fixed cost, average fixed cost, 5, 10, 15, 20, 25 and 30, like that. Okay, now you can see in 10 it is 30, so in 10 it is 30, in 20 it is 15, in 20 it is 15, in 30 it is 10, see. In 40 it is 7.5. Now where 7.5 will come? देखो ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, तो 5, 6, 7, 8, 9 चारों के चारों पॉइंट इधर आएंगे, तो somewhere here 7.5. And that's it. Okay, and last, that is 50, and this is 5 and this is 6. Okay, and when we draw the graph, it will move downward like this way. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है, एज प्रोडक्शन हैज इंक्रीज, बराबर है, हम लोग 10 से जो है 50 तक गए, तो वैसे वैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है रिड्यूस होती चली जाती है. देखो 30 से 15 हुई, 15 से 10 हुई, 10 से 5, 7.5 से 7.1. लेकिन इनके बीच का डिफरेंस देखो तो जरा, यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना ज़्यादा है, 30 और 15 डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों के बीच में देखो सिर्फ 5 का डिफरेंस है. इन दोनों के बीच में समथिंग 2.5 का डिफरेंस है. ओके, एंड हियर ओनली 1.5 का डिफरेंस है. मीन्स जैसे जैसे प्रोडक्शन की क्वांटिटी बढ़ेगी, एवरेज फिक्स कॉस्ट डाउन होगा, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से घटता हुआ जो है आगे बढ़ेगा. ये इतना याद रखना, जीरो नहीं होगा, it will be not negative. Is it clear? So that is your average fixed cost. Okay, it is saying, see here, average fixed cost decrease as output increase. It means the average fixed cost curve is having left to right, upward to downward slope, ऊपर से नीचे downward slope है. Okay. Average fixed cost decrease but never become zero. लेकिन zero तो कभी नहीं होगी भाई. Is it clear? Now next one is here average variable cost. Let's see it. इसको भी देख लेते हैं जरा हम लोग. Average variable cost. So total variable cost of firm divided by the total unit product, we get average variable cost. You can see here average variable cost. When total variable जो cost है, okay,
and when it is divided by output or the total production, is it clear? Yes, total production, then we will get the average variable cost. Okay, we get average variable cost. Average variable cost is a variable cost per unit of output. This concept is useful in taking the decision regarding the continuous production. यहाँ से जो है आप ये समझ सकते हैं कि प्रोडक्शन और आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है और प्रोडक्शन को स्टॉप कर देना है. Is it clear? Or closing down to find out the cost formula. Okay, it is mentioned here. Now you understand this schedule and graph. इसको जो है समझने की कोशिश कीजिए. बराबर देखना, इन दोनों में देखो आपको फर्क भी समझ में आएगा. अब यहाँ पे आउटपुट क्या दिया है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट आप देखो 10 यूनिट पर 80 है, 20 यूनिट पर 150, 30 यूनिट 210, 40 यूनिट 290, 50 यूनिट 390, 60 यूनिट 500 and 70 यूनिट 620. Okay, if you divide this number 80 by 10, 150 by 2, 210 by 30, then you will get all these variables. Okay, if you show in the graph, is it clear? It is from 8 to 8.8 something. So in I have taken average variable cost 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and then 9. Is it clear? And your output that I have taken in the x-axis, 10, 20, 30, 40, 50 and 60 and then 70. Is it clear? Now see, 10 production per 8 था average cost 8 था. 20 प्रोडक्शन बढ़ा, देखा एवरेज कॉस्ट कम हुआ 7.5, 1 पॉइंट नीचे आ गया. बराबर, ये यहाँ पे है. 30 प्रोडक्शन और बढ़ा, देखा और कम हो गया 7, यहाँ पर है. ओके, 40 थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ, बढ़ा. बराबर, अब देखो प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो कॉस्ट जो है यहाँ तक तो बिल्कुल डाउन में गया है एकदम, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा, कॉस्ट बढ़ा. उसके बाद में वापस से देखो 50 यूनिट जैसे प्रोड्यूस किया, 7.8 तक हम लोग पहुंचे, यानी यहाँ पर. ओके, एंड देन 60 पे हम लोग 8.3 तक पहुंचे, यानी यहाँ पर. और लास्ट में जो है हम लोग 70 यूनिट प्रोड्यूस किया तो 8.8, बिल्कुल ये यहाँ पे हम लोग पहुंच गए. ओके, अब आप यहाँ पे जरा मार्क करो. शुरुआत में कॉस्ट ज़्यादा थी, फिर कॉस्ट रिड्यूस होती चली गई, फिर कॉस्ट घटी और फिर उसके बाद में वापस से कॉस्ट बढ़नी शुरू हुई. बराबर है, यानी कि लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन के अंदर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होता है एज प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड. जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होता चला जाएगा. नेगेटिव तो होने की बात ही छोड़ दो. ओके, नाउ सी इट्स. As output increase, average variable cost also increase. Initially, with increase the production, average cost decrease. मैंने बताया था, शुरू में प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो ये देखो यहाँ तक घट रहा है. ओके, then it become minimum, बिल्कुल लेवल तक चला गया, देखो 7 तक चला गया, ये एकदम घट के नीचे आ गया, है ना. It become minimum and then after with increase the production, average variable cost increase. It means it has relation with the volume of production. यानी क्वांटिटी में जितना ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, वेरिएबल कॉस्ट उतनी बढ़ती चली जाएगी. And this can understood with the help of this diagram which I explained you just now. Okay, and with this you can understood that
the first average variable cost move left to right, upward to downward. पहले जो है देखो ये नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आती है, downward. Okay, means it has decreased. But after the production, लेकिन यहाँ पे देखो आप 30 तक पहुंचे, लेकिन after the unit 30 unit, okay, average variable cost increasing trend apply in the beginning in increasing return to scale, and afterward return of scale may become like a supply. मतलब ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ. पहले इसका जो है स्लोप डाउनवर्ड था, नेगेटिव था, और फिर ये अपवर्ड होना शुरू हुआ. ओके, एंड नाउ नेक्स्ट इज योर एवरेज कॉस्ट. उसको देख लीजिए, और यहाँ पे हमारा ये आज का पार्ट खत्म होगा. एंड लास्ट पार्ट we will try to understand the relationship between the marginal cost or marginal cost and average cost में क्या relation है, that we will try to understand. Okay, and then revenue, what is exact revenue pattern, that we will try to understand. So see further, आगे देखिए जरा इसको, so you will get more idea, ज़्यादा आपको idea आएगा. अब जरा आगे देखिए, टू मोर कंसेप्ट्स आर देयर. वन इज योर एवरेज कॉस्ट. ओके, एवरेज कॉस्ट का मतलब समझते हैं. एवरेज कॉस्ट इज नोन एज द एवरेज टोटल कॉस्ट, दैट इज द ATC. एवरेज कॉस्ट इज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन. हर एक यूनिट पे लगने वाला ऑन एवरेज जो कॉस्ट है, दैट इज द एवरेज कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट इज फाउंड बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन. ओके, यहाँ आप देख सकते हो एवरेज कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन. सो यू कैन सी हियर total cost 9, 16, 21 and total production is 1, 2, 3, 4, 5. So 9 divided by 9, 16 divided by 2, 18, 21 divided by 3, 7, 28 divided by 4, 7, 4 7s are 3 7s are. Now 5 8s are 40, 6 9s are 54 and 7 10s are 17. Like that way you get the average cost. Okay, so the total cost is the sum of the total fixed cost and total variable cost. Therefore total cost plus total variable cost is divided by the production unit, we get the average cost. Okay, so here you can see the graph. In 1 unit production is 9. See, in 1 unit production is 9. In 2 unit production is 8. In 3 unit production is 7. In 4 unit again production is 7. See, in 5th unit production is 8. देखो, अभी आप लोगों को ये ट्रेंड समझ में आएगा. In 6th unit 9 and in 7th unit it becomes 10. Means initially your average cost is reduced. शुरू में घटता है, फिर ये फिक्स हो जाता है. देखो यहाँ पे दोनों 0.77 है. And after that as production has increased, average cost also increase. और इसका शेप कुछ इस तरह से U शेप हो जाता है. बराबर, ठीक है. इट इज जस्ट लाइक अ U शेप. Okay, average cost curve become U shape. Initially when increase in production the average cost decrease. देखो शुरू में production बढ़ रहा है, cost घट रहा है. After that it becomes stable and then it started to increasing. बराबर, फिर ये बढ़ना शुरू करता है. Okay, so increase in production the average cost decrease in a particular level of production minimum, but after it increase and increase production, therefore average cost curve is U shape. Like this way. Next is your marginal cost. भाई बड़ा मजेदार है, सीमांत बोलते हैं इसको, लास्ट. बराबर है. तो टोटल कॉस्ट में से अगर एक कॉस्ट माइनस कर दो तो दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट. सी फॉर्मूला,
टोटल कॉस्ट में से अगर आप एक यूनिट कम कर दो तो दैट इज अ मार्जिनल कॉस्ट. ओके, आई हैव एक्सप्लेन यू हियर, बट बिफोर वी जस्ट अंडरस्टैंड द मार्जिनल कॉस्ट. If production is increased, the total of production also increase. With the increase or decrease of 1 unit of total production, whatever change take place in total cost is known as marginal cost. In short, marginal cost is the change in total cost when an additional unit of output is प्रोड्यूस. जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करते हो दैट इज द मार्जिनल. मैं आप लोगों को मैंने नॉर्मल एग्जांपल में ऐसे समझाया कि भाई आपकी 5 रोटी खाने की ताकत है और आपने एक एक्स्ट्रा और रोटी ले ली, हालांकि पेट में समा नहीं रहा था, हाँ वो करके, तो दैट एक्स्ट्रा वट एवर एडिशनल इज देयर दैट इज द मार्जिनल एंड दैट इज कॉल्ड सीमांत. एंड आ गया उसका भैया, अब इसके आगे और कोई ताकत नहीं है, तो दैट इज द मार्जिनल. ओके, द टोटल this should keep in mind marginal cost independent on fixed cost. हमेशा याद रखना marginal cost fixed cost के ऊपर ही डिपेंड करेगी, and therefore it can be said the marginal cost is result in the change in variable cost when production decrease and the goes n minus 1, यानी कि एक additional unit कम हो जाता है and then and increase the total variable cost is equal to marginal cost with the change in production. Now let's understand with the help of this schedule and graph. यहाँ पे जरा इसको देखिए, आपका टोटल प्रोडक्शन 1 2 3 4 5 6 7 तक है. टोटल कॉस्ट आपका 19 16 21 28. अच्छा, फर्स्ट कंडीशन में ये ऐसे रहेगा, लेकिन नेक्स्ट में देखो 16 माइनस 9 करोगे देन यू विल गेट ये है ना TC माइनस n माइनस 1, यानी एडिशनल ऊपर वाला जो है आपने माइनस किया. सिमिलरली 21 माइनस 16 5, 28 माइनस 21 ओके 7, 40 minus 28 12, 54 minus 40 okay that is 14 and 70 minus 54 that is 16. अब जब आप इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करोगे देखो 1 यूनिट में इट इज 9, देखो 1 यूनिट में 9, 2 यूनिट में देखो 7, 3 यूनिट में इट इज अगेन रिड्यूस बाय 5, देखो यहां तक पहुंचा. 4 यूनिट में देखो ये वापस इंक्रीज हुआ, वापस से 7 तक पहुंचा. 5th यूनिट में देखो ये 12 तक गया. ओके, इन 6th यूनिट देखो 14 तक गया एंड इन 7th यूनिट इट हैज रीच अप टू 16. And when you draw this graph, देखो अब इनिशियल लेवल पर एज प्रोडक्शन हैज इंक्रीज, कहाँ तक देखो 6th यूनिट तक जो है ये बिल्कुल जो है डाउन डाउन डाउन. 6 यूनिट तक जो है ये देखो 4 यूनिट तक जब तक प्रोडक्शन, 3 यूनिट तक प्रोडक्शन जो है जब तक बढ़ा तब तक बिल्कुल नीचे तक जो है ये कॉस्ट चली गई थी. बट आफ्टर दैट इमीडिएटली जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हुआ, कॉस्ट जो है मार्जिनल कॉस्ट जो है घटने की जगह पर क्या हो गई, वो भी जो है बढ़ने लगी, इंक्रीज होने लगी. ओके, और इसका जो शेप आता है इट इज जस्ट लाइक अ हॉकी स्टिक. हॉकी स्टिक आप लोगों ने देखी होगी, कुछ इस टाइप की होती है. ओके, एंड इट शेप इज लाइक आल्सो दिस वे. ओके, सो इट इज सेइंग दैट due to initially with increase in production marginal cost decrease and after some point it increase in the diagram as shown in this figure and it looking like a hockey stick till the 3rd unit marginal cost decrease and therefore marginal cost has negative slope after 3rd unit. और उसके बाद में फिर देखो इसका यहाँ पे जो है फिर लेकिन वापस ये पॉजिटिव हो जाती है. ओके, एंड देन इट बिकम अगेन पॉजिटिव, फिर से ये ऊपर की तरफ चली जाती है. So this much we have understood. Now what is the interrelationship between the average cost and marginal cost? इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? ये एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में अगर आप यही ग्राफ अगर आप यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे तो यू विल गेट द आइडिया कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है. बट ब्रॉडली आई विल एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट लेक्चर and then we will understand one more concept and that is the revenue and chapter will be over. Okay, bye, see you.